सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पूरे एक हफ्ते बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं और इस बार हम रिव्यू करने वाले हैं हंगर गेम्स का कुछ प्रीक्वल या एक स्पिन ऑफ मूवी आ रहा है। तो उसके बारे में कुछ साउंड बर्ड और स्नेक के बारे में कुछ टाइटल मुझे नहीं पता, मैं अभी देख के बताता हूँ फिर से। बट पर्सनली मैंने कुछ ऐसे हंगर गेम्स को देखा नहीं है, तो आई गेस कि एक अच्छा रीज़न होगा कि एक स्पिन ऑफ से स्टार्ट करूं। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे चर्चे बहुत सुने हैं मैंने हंगर गेम्स के बारे में, पूरा पॉलिटिक्स और सब है, तो आई गेस कि देखते मज़ा आएगा। आई लाइक पर्सनली लाइक पॉलिटिक्स, तो देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से रिव्यू की तरफ चलते हैं। और ओके, तो हंगर गेम्स बलाड ऑफ सॉन्ग बर्ड एंड स्नेक्स का रिव्यू होता है। चलो 3, 2, 1 चल। We're live! Mr. Snow, after everything you've seen out there in the world, what are the Hunger Games for? Are you coming to the tree? The Hunger Games, they're to punish the districts. Those tributes don't have a choice. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. So we both be free. We're live! Smile. It's why we have teeth. Imagine it was your name that they pulled. Strange things do happen here. I just want to know that somebody still cared about me, that I was still of value. Welcome to the Capitol. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. I am gonna get you out of here. If you want to protect people, then it's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. Let's see you use that famous snow charm. You seem like a good man, Corleone Snow. I have seen what war does to people. Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? I want my enemies to see a rainbow of destruction engulfing the world. You're monsters! All of you! Good luck with that poor little songbird. Where is she? It's a mystery. And mysteries have a way of driving people mad. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Hanging tree. It's the things we love most that destroy us. ओके, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक गेम ऑफ थ्रोन वाली थोड़ी सी फीलिंग है, थोड़ी सी ऐसे फ्यूचरिस्टिक वाली फीलिंग है। जो पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं उसकी बहुत देखने में अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। पर मज़ा आया। और ये जो फीमेल एक्ट्रेस है वो क्या सीजन 2 में थी एज ए लीड रोल आई गेस। तो हाँ, उसको काफ़ी क्यूट है, तो उसको देखने में भी एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं, ऐसे अच्छी वाली एक फीलिंग है कि माइंड गेम्स देखने को मिलेगी, पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, थ्रिल होगा। तो यही था कि एक्साइटेड। और नवंबर 17 देखते हैं कैसी होती है। तो इसी के साथ अगर अभी तक यहाँ पे देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।